Is Godavari itself called as Gautami here, or it's some other river, tributary of Godavari? It's pretty huge, long river. We cannot see the other end. So we are about to touch the national highway. Here we go. So we'll stop somewhere so that we reset ourselves, our mindset, riding from village roads to national highway. Find a good place to stop, and it's a good idea always whenever you have such change in the roads to just stop for a few minutes, reset yourself, and then carry on. शोभा भी पीछे हिल डुल रही है. आज तो इंटरकॉम है नहीं, तो आई एम नॉट अवेयर what is her state. She might also be looking for a break. We are crossing some river, most likely probably Godavari or one of its tributaries, not sure. इस रोड पे अभी थोड़े आगे near Rajahmundry we will be passing through some of the largest nurseries in the country. So पूरी इंडिया को सप्लाई होता है यहाँ से plants of various sizes. So anyone want to source large number of plants can source it from Rajahmundry. So आपकी जो local nurseries होती हैं वो generally यहाँ से ही procure करते हैं. अब हम घुस गए हैं गलत लेन में. I need to go on to the bike lane. ये बड़ा फ़ायदा है बाइक का. You don't need to pay any toll, or neither you need to waste your time at the toll. वैसे अभी फास्ट टैग आ गया है तो it should be faster, I believe, than collecting the cash. So हम जब वहाँ नर्सरीज़ के बाजू से निकलेंगे, that would be the place we'll try to stop over. So it's very cloudy today, which is one way good for us. Because you have to cover longer distance, and under cloudy conditions it's much better. It's pleasant temperature wise. Should be in mid-20s, I guess. Which river? Okay, so this is a Gautami river. Is Godavari itself called as Gautami here, or it's some other river, tributary of Godavari? It's pretty huge, long river. We cannot see the other end. So we are still about 25 kilometers from Rajahmundry. We need to find out about this river. It's huge. कहाँ से ओरिजिनेट होती है, where it definitely must be meeting Godavari, that's for sure. You can figure out the extent. और यहाँ से नर्सरीज शुरू हो गई हैं. इस वन श्री सत्यनारायणा नर्सरी. अब यहाँ से काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक नर्सरीज मिलेंगी. लेट्स सी, कोई अच्छी नर्सरी दिखेगी तो विल स्टॉप ओवर. लेफ्ट साइड में नर्सरी. We'll stop over somewhere left side.
on the right side of the road. Left side is there because there is a canal running along, so smaller nurseries are there on the left side. See. Left side is Rajahmundry, about 8 kilometers, and straight will be carrying on this road for seems to be a bypass or an outer ring road sort of a thing. Typical suburban sort of a place, outskirts, some industrial areas. So if you want to source plants for your project, large project, you can do it from this place. You can directly buy larger plants, and if it's smaller requirement, then local nurseries generally will fulfill those. 2 घंटे हो गए हम लोगों को चलते हुए. Not able to find a good spot so far. ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है because of passing through राजमंड्री बाईपास. देखते हैं आगे कोई अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ रुकेंगे. Just to take a break, have some small cup of tea and 15 minutes break, stretch out. Couldn't find a place so far, so we stopped here. Seems to be okay. A lot of eateries, interesting eateries, Andhra snacks and tea stall. So यहाँ से हमको करीब 4 घंटे और लगेंगे राइड के, और 1 आध घंटा समझ लो स्टॉप ओवर्स. सो अबाउट 3 o'clock I'll be reaching. So far so good. Weather is very supportive. ठंडे ठंडे में निकल रहे हैं हम. अभी तक सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ओके. लेट मी चेक द रियर लगेज. टेल बैग तो इसको बीच बीच में लुक्स टू बी ओके. एक साइड थोड़ा अलाइन वन साइड है, बट इट्स ओके. हमारा स्टॉप ओवर जो है 35 मिनट का हो गया, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड वन, बिकॉज ऑफ आई हैव ऑलरेडी डन. शोभा आई हैव ऑलरेडी डन इट. हाँ ठीक है. सो लंबा हो गया है क्योंकि वो इंटरकॉम को भी वो ट्राइंग टू फिक्स नहीं हुआ, जो कि ऐसा समझ में आया कि हमारा हेलमेट वहाँ जो सिक्योरिटी पे रखा था स्टर्लिंग रिसोर्ट पे, वहाँ गिरा दिया लगता सिक्योरिटी वालों ने. सामने बहुत सारा स्क्रैच है और मे बी उस वजह से इंटरकॉम को कुछ हुआ है. एनीवेज कैन नॉट हेल्प. सो आई हैव आस्क्ड Shobha to put music so that at least she will be engaged. Just figured out that all the footages, recordings between 9 o'clock, 9:30 to 11:30 is missing, not recorded, which is unfortunate because I had taken through the nursery, Rajahmundry highway, and then a lot of recordings were there which are all seems to be missing. Not sure what has happened. So this is also part of experience. Your efforts, sometimes go in vain. You have to live with it. So आज का दिन मिक्स्ड रहा है अभी तक. Weather has been good.
kind enough to, so far not very hot, but sun has started blazing now. So now next couple of hours will be hotter. Our intercom is not working. Lost the recordings, but we are on time, and the ride is going all right. So still 3 hours of travel time plus about an hour of stoppages, so 4 more hours to go. So 3:30 is what I am anticipating by when we will reach Vizag. स्टॉप फॉर रीफ्यूलिंग. हमको सिर्फ उतना फ्यूल डलवाना है कि पहुंच जाएं और थोड़ा सा बचा रहे, क्योंकि टू पुट इट ऑन ट्रेन द टैंक शुड बी एम्प्टी. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द फ्यूल. सो अभी रिजर्व में लगी थी, तो वी स्टॉप्ड फॉर फ्यूलिंग. एंड कितना रखा है पेट्रोल की वी विल कंफर्टेबली रीच. एंड जो भी लोकल भी जब तक स्टेशन जाएंगे रहेगा, 1-2 लीटर शायद एक्स्ट्रा हो तो वो निकाल देंगे. 12 बजे करेक्ट, एग्जैक्ट 12 o'clock. विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द मिसिंग विंड स्क्रीन, विंडशील्ड. ठीक है. This is also an experience because I've never driven on highways without windshield. काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है. I'll get used to it.